Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours. And they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush. And they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you are standing for. We know what you are standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February.
which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results with the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers, to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फौरन ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी बहन अलीमा हबा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मजबूती में जंग लड़ी है। अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ। Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम
कदम बढ़ाओ, तराजू तोल के देखो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। एक गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सके। कोई दोस्त वहां से बोलेगा, नीचे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल दो। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह की। thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labak got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard. And they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise, be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Charsadda bhai. Thank you so much, Ayaz Mirza, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी
रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करेगी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे गए और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ हैं और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के पुल मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक अकेली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है, मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वही उनकी थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही मुहाफ़िज़ थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म क्यों? मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद, वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 350 ये माँ जी 350 ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के कागज आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ले गए। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर गए। साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा, रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिर गई। मैं पूछती थी कि क्या मेरा रायपुर में जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ। मगर उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरओ इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रख के ऊपर मैंने वही किताब
हेदिन सिरातल मुस्तकीम, जो हमारे नबी पर उतारी गई थी, ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी, अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म। और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो, अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से, माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा, माँ नहीं गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो, हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे, मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल, और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी, और उसका नाम क्या है, असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी। और मैं शहर सियालकोट की माँ, जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली हैं। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ, तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं। ये जलसा नहीं है, मेहरबानी करें तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने सामने फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का PTI का जो बयानिया है वो ऑलरेडी, दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर जाए जो इफेक्टेड MNAs और MPs नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिर MNAs और MPs फ्रंट पेज जो साहिबान जिन्होंने अपना ज़ाहिर राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें, फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से जेली तौर पे आपको अरवाया हुई है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सके। थैंक यू। अब हम सुमा जी, अब हम now I would like to request Akram Salman और रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे, सबको मिल रहा है जी। हेलो Akram Salman और रविस्तान जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूंगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से MKM को
شہر کراچی کے اندر یہ تحفے کی شکل میں سیٹیں بانٹی گئیں، میں آپ سے لفظ استعمال کروں گا، بانٹی گئیں، اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب 2018 میں بھی اپنی حکومت بنائی تھی تو اس کے اندر سب سے بڑا رول جو پلے کیا تھا وہ شہر کراچی نے کیا تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2024 میں الیکشن ہوئے تو جتنا ووٹ تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دفعہ ملا وہ شاید 2018 میں بھی نہیں ملا ہوگا. جو فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں ان فارم 45 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اندازاً 12.5 لاکھ سے لے کے 13 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو دیے. میں زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں آپ کو خالی 3 ایگزامپلز دوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنی 19 سیٹیں جیتی ہیں. 19 سیٹیں 19 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہم نے کراچی میں جیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے سندھ کے اندر جو ہے وہ ریزلٹس کراچی کے اناؤنس ہو ہی نہیں رہے. اور مراد علی شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، سعید غنی کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے، ناصر شاہ کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے. لیکن مجال ہے کہ کراچی کی بات ہو جائے. حیدرآباد کے اندر ہم نے اتنی بڑی لیڈ لی ہے کہ کوئی حساب نہیں. 6 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. وہاں پہ وہ ساری سیٹیں کھا کر حیدرآباد کی ایک سیٹ دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بدنام زمانہ جو سیاسی جماعت MQM جو ذمہ دار تباہی کی پاکستان کی معیشت کی پچھلے 30 سال تک، اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر. ان کو جا کے سیٹیں تحفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو. ان کو 2.25 لاکھ ووٹ بھی نہیں ملا ہے جو ریزلٹ ہمارے پاس فارم 45 کے اندر یہاں پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بعد نمبر 2 پہ آئی ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی 3رے نمبر پہ تھی، TLP 4تھے نمبر پہ، اور MQM جس کو بانٹا گیا ہے سیٹیں وہ 5ویں نمبر پہ تھی، 5ویں نمبر پہ. یہ ہم فارم 45 کے اندر اس کو ثابت کریں گے. سو میں آپ کو خالی 3 ایگزامپل دوں گا اور اس کے بعد میں ختم کروں گا کہ NA 236 میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے 1,03,640 ووٹ لیے اور اس کو کتنے ووٹ دے دیے؟ اس کو 1300 ووٹ دے کے فارغ کر دیا. 1300. NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا جی آئی نو جی. سو NA 241 جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا تھا 78,000 ووٹس میں نے سیکیور کیے. 78,000. میرا ریزلٹ کیونکہ RO نہیں اناؤنس کر رہا تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرا RO جو تھا اس نے ریزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا. آدھی رات کو اس کو ہٹا دیا، آدھی رات کو تبدیل کر کے کسی خاتون کو بلایا، اسے ڈرایا دھمکایا اور ریزلٹ چینج کر دیا. تو یہ حال ہے کراچی شہر کے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہائی لائٹ کراچی کو پلیز ہائی لائٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. ٹائم کسی بھی اسپیکر کو نہیں دیا جائے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، ان کا ٹائم بڑا قیمتی ہے. یہاں پہ اسپیچز نہ کریں، پریسائزلی بتائیں فارم 45 میں آپ کے کتنے ووٹ ہیں، 47 میں آپ کے کتنے ووٹ ہیں. سارے پنجاب کے لوگ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں ہماری انٹرنیشنل میڈیا کا اور لوکل میڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، سندھ سے کراچی سے ہم نے پروونشل اسمبلی کی 34 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن MQM اور پیپلز پارٹی نے RS کے ساتھ مل کر ہماری وننگ کو جو ہے وہ شکست میں بدل دیا. میں آپ کو اپنے میرے 4,167 ووٹ تھے، پیپلز پارٹی کے 3,278 ووٹ تھے. ان کے فارم 47 میں 7,000 ووٹ کر دیے اور میرے 2164 کر دیے. یہ ROs اور ان کے ساتھ جو مافیا تھا انہوں نے یہ ظلم، یہ جبر پورے سندھ میں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا ہے. تو آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ان باتوں کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہی اسمبلی میں آئے. یہ چور، یہ ڈاکو جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہے، ان کو آگے نہ آنے دے. شکریہ. تمام اسپیکر اپنا تعارف کریں. یہ عربستان تھے،
ہمارے سابق MPA بھی ہیں اور ابھی پروونشل اسمبلی میں اب سیف الرحمان صاحب بات کریں گے. نیشنل اسمبلی کے ہمارے امیدوار ہیں کراچی شہر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف الرحمان اور میں کراچی NA 235 سے الیکشن لڑا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ 45 میرے حلقے NA 235 میں ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشن ہے اور میں اپنے کھاتا ہوں کہ یہ 95 پولنگ اسٹیشنوں کا نتیجہ ہے. اور میرے مد مقابل کے جو کینڈیڈیٹ ہے میں آج بھی اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے گھر کے 3 افراد جن پہ میں ہاتھ رکھوں وہ یہ قرآن اٹھا لے کہ اس کے پاس جو رزلٹ موجود ہے مبنی ہے تو میں اپنی ہار بھی تسلیم کر لوں گا. میں نے ابھی بیرسٹر نسیم صاحب کو عدالت میں کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ قرآن اٹھا سکتے ہیں, آپ قرآن اٹھا لیں, میں آپ کی یہ جیت تسلیم کر لوں گا اور آپ کے ساتھ یہ جو دوسرے شخص موجود ہے. تو وہ مسکرانے لگا. میں نے کہا میں یہ قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ آپ کے پاس موجود یہ جو فارم 45 ابھی دکھایا نہیں ہے آپ نے جسے آپ مینج کر رہے ہیں, یہ جھوٹ پر اور ڈھکوسلے پر مبنی ہے. اور یہ 45 فارم وہ 45 فارم ہے جو ریاست کے ادارے الیکشن کمیشن کے متعین پریزائڈنگ افسران کی طرف سے ہم کو دیے گئے اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا آج سے پہلے طریقے کینڈیڈیٹ پر کہ یہ اپنا 45 فارم حاصل نہیں کرتے. میرے حلقے میں 2 نوجوانوں کو گولیاں ماری گئی. میرے حلقے میں جگہوں پہ دنگے فساد ہوئے. اس کے باوجود تحریک انصاف کے ورکر نے 45 حاصل کیا. اور کراچی NA 235 سے بزرگ بوڑھے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ اسے مینج کرنا نہ کی بس کی بات تھی اور نہ کسی استاد کی جو استاد مینج کر رہے ہیں اس کو. پاکستان زندہ باد. میں شوکت محمود بسار میرا اچھا بسمانی میں اپنا حلقہ بول دیتا ہوں. ایک اوپر ایک نیچے, ایک اوپر ایک نیچے. یہ لے اس کے بعد شوکت بسرا صاحب کے بعد قاسم صفی صاحب, اس کے بعد سمیع اللہ چودھری صاحب. چلیں شروع کریں سر, شروع کریں. اور پھر ہمارے اسلام آباد سے شعیب شاہین صاحب نے ریپرزینٹ کریں گے اسلام آباد. چلیں شروع کریں سر, شروع کریں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NA 49 اٹک 1 اور میری بیٹی ایمان وسیم NA 50 اٹک 2. ہم دونوں کینڈیڈیٹ تھے PTI کے عمران خان صاحب کے. ہم حلقے میں نہیں گئے. میرے RO کو 2 دن پہلے انہوں نے چینج کیا اور ایک SC سپرنٹینڈنگ انجینئر جو کرپٹ تھا اس کو بلیک میل کر کر وہاں لگایا گیا. کوئی بات نہیں, ہم حلقے میں نہیں گئے. ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا, ان کو کہا گیا کہ اس کو ووٹ دو. اور بھائی تم تمہاری کمپین کر رہے ہو, تم بندوں کو اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اس کو ووٹ دو. وہ جب واپس جاتے ہیں تو 100 بندہ کو مبارک دینے آ جاتا ہے. کمپین تو تم میرا کر رہے ہو, تم کس جگہ پہ بھولے ہوئے ہو. اس کے بعد میں مختصراً آپ کو اپنے حلقہ میں نے ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئی ہے وہ اس میں سے 1,45,119 ووٹ میں نے لیا ہے اور شیخ آفتاب احمد PMLN 79,660 اور میں 65,503 ووٹ سے جیتا ہوں. میرے پاس یہ پورا فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ایمان طاہر وہ جیتی ہے الحمدللہ. 3 کینڈیڈیٹ تھے, ایمان طاہر, حافظ سعد رضوی صاحب اور ملک سہیل جو کہ نور لیگ کا تھا. ملک سہیل تیسرے نمبر پہ تھا. یہ حافظ رضوی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ تیسرے نمبر پہ تھا اور ایمان حافظ صاحب سے 22,417 ووٹ زیادہ لے کر نمبر 1 پہ تھی. اور راتوں رات انہوں نے سارے چینج کیے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم کھڑے سر. تھینک یو. اور اللہ کے فضل و کرم سے کھڑے رہیں گے. نہیں میری باری ہے یار.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा बेटा अभी बाकी है हमारा ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों को आगे से बंदे हटे तीनों, ये असेंबली के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई आप लोग खाली करें स्क्रीन, ये तीनों असेंबलीज खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे, इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी, वो राइट साइड में बंदे खड़े उनको भी उठाएं, सब लोग हटे वहां से, सारे शाबाश जल्दी हटे। बिस्मिल्लाह नजर आ रही, खाली करें स्क्रीन, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई, हटे आप लोग। हेलो नीचे उतरो स्क्रीन से, बिस्मिल्लाह ऑन करो जी, स्क्रीन से नीचे उतरे आपका एक मिनट खत्म हो गया। हेलो बस साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो चले आपको आवाज आ रही है जो आप करो इसको करना। हेलो नहीं आप वैसे हेलो आपको मेरा तो पता है ना 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो, एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले, ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें, ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे, आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है, मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर कहर नाज़िल होगा। हमारे बारी चल जाएगा, कम होने मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में, और जो इदारों में लोग बैठे हैं अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हल तक कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? सिर्फ जीटी रोड में आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे, अल्लाह का खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है, मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे, शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नूर की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया आमर डिक्टेटर जिया हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास